Hello students, welcome to BIREN'S Academy. आम आज पेपर 3 रो क्वेश्चन आम डिस्कस करिया को जाउछे. सो एटा हला हमर अनऑफिशियल आंसर की ऑफिशियल आंसर की आसले आउ टिके मैच करबा और किछिटा इथे जदी रॉन्ग थिबो कमेंट बॉक्स रे जणैबो हम ताकू टिके एनालिसिस करबा जेहेतु एटा मोर निजर एनालिसिस आंसरटा तो किछिटा भूल थाई पारे तो सेटा कमेंट बॉक्स रे कहि देले हम आउट थरे एनालिसिस करबा आउट थरे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा. तो मु ओनली आंसर गुड़ाक कही दूसरी से पॉसिबल नुह कि सबू आंसर डिस्कस एना करी हबो. ओनली आंसर कही दूची ताको मैच करदेव आ नेक्स्ट आमर पेपर 2 मध्य आसीज आंसर की टिके टाइम लगे पेपर 2 पई आसीज. ठीक अच्छे. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ भी होप करुच्ची कि पेपर 3 बहुत भल हो भल क्वेश्चन आसी किछटा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन अच्छी. देखिए आंसर कौन आसूची आ मैच करिवो जहाँ मार्क रखिवो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो. ठीक अच्छे. सो नंबर 1 इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ द ऑब्जर्व्ड रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द पेरेंटल फिनोटाइप्स व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द जीन दैट मीन्स दे आर अनलिंक्ड. ठीक अच्छे. तो आम जाचे जो मैंने लिंक्ड जीन था से केस रे पेरेंटल फिनो माने पेरेंटल कैरेक्टर आमर कौन हुए ना बेसी आसे रिकॉम्बिनेंट कम आसे. जदि लिंक्ड ही रहिबे नहीं ताले माने टू फार एपार्ट रहिबे ताले से माने अनलिंक्ड ही हेबे. तो सही टाइम रे आमे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप बेसी देखिबा को पाइबा. सो व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टू सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम. Then which chromosomal aberration involves the exchange of genetic material between the non-homologous chromosome? So non-homologous chromosome देखिए, so that is translocation. तो ये जो हमें पेपर टे डिस्कशन करूचे एटा हला सेट रहला हमरो D. So during which phase of mitosis do sister chromatids separate? Chromatid separate कथा कहिची. So हमरो आंसर आसे जिवो anaphase. देन ये जेनेटिक्स रो क्वेश्चन आसी पेनिट्रांस एंड एक्सप्रेशन जो माने क्लास करी थिबो हमरो पेड बैच रे से माने पेनिट्रेशन और एक्सप्रेशन पढ़ी थिबो बट क्वेश्चन टिके कंफ्यूजिंग करी देची. हमको ऑप्शन ए और बी भितर कंफ्यूजन आसुची. क्वेश्चन देची पेनिट्रांस रेफरेंस टू प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विथ ए स्पेसिफिक जीनोटाइप showing the expected phenotype while expressivity refers to the degree of phenotypic variation. So ऑप्शन सी हम ना ऑप्शन डी भी हम ना. तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक ट्रेट रू मत ओवियस लगुच जेनेटिक ट्रेट. देखा ऑफिशियल आंसर किए आसे आम मैच करवा कौन ये दुटा भितर कौटा आसूची आम चेक कर. सो नंबर 6 रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज वुड लीड टू इंक्रीज्ड CMP लेवल इन अ सेल दैट इज एक्टिवेशन adenylyl cyclase by G protein coupled receptor. So during which phase of meiosis does genetic recombination asila mane prophase 1. So imagine a genetic disorder caused by a dominant allele. Some carriers of this allele exhibit mild symptom, other have severe symptom. A case ase amara variable expressivity case. Next question number 9. Following factor is directly involved in the stabilization of the fibrin mesh during blood coagulation. What is its mode of action? That is factor number 13 responsible. It cross-links fibrin strands. Then question number 10. Which factor is deficient in hemophilia A and what role does it play in the coagulation cascade? That is factor number 8 responsible and it acts as a cofactor for factor 9. In which condition does hemoglobin demonstrate the Bohr effect and how does it affect ऑक्सीजन बाइंडिंग. सो बोर इफेक्ट देला तो आम ये जाना कि जे केस रे pH लो हो जाए है कि. सो pH लो हो गले कौन हम ना ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज कर. सो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज कला माने आमे कौन जानिबा कि सी कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने को ट्राए कर. सो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आसो. सो pH लो हेले ही आमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनबो. ऑक्सीजन प्रति तार एफिनिटी कमिबो कार्बन डाइऑक्साइड प्रति बढ़िबो. दैट इज बोर इफेक्ट. देन नंबर 12. So 2,3-diphosphoglycerate that is acid, obviously glyceric acid, binds to the central compartments of the hemoglobin tetramer, shifting the oxygen dissociation curve 2.
तो जेहेतु ये गोटे एसिडिक सब्सटेंस तो ये कौन होची ना H+ आयन आमर हाई देखा सो pH लो हम जदि pH लो हो गला ताहले आमे ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जोटा कि टुवर्ड्स आमे राइट देखा को पाइबा। देन क्वेश्चन नंबर 13 काउंटर करेंट मल्टीप्लायर सिस्टम इन किडनी रेफर्स टू दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो जो लूप ऑफ हेनले रहिबो एठी हमर काउंटर करेंट मेकानिज्म देखा जिवे। देन बाउमेन्स कैप्सूल इज लोकेटेड इन renal cortex किडनी रे renal cortex। Which mechanism allows freshwater fish to maintain osmotic balance and how does it differ from that in marine fish? जेहेतु फ्रेश वाटर फिश कथा कही सो ओब्वियसली एक्सक्रीटिंग डाइल्यूट यूरिन लार्ज अमाउंट वाटर पीबे नहीं से माने आयन अब्जॉर्ब करेंगे थ्रू द गिल्स। देन नंबर 16 व्हिच स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर्स सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूजन। तो सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूजन आसला माने कैल्शियम आयन रो बहुत रोल रही सो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल द्वारा रेगुलेट हुए दैट इज बी। The change in electrical potential associated with the passage of an impulse along the membrane of a nerve cell आम जाने आमर रेस्टिंग पोटेंशियल जोटा कि आम कौन कहे पोलाराइज्ड स्टेज देन डीपोलाराइज्ड स्टेज देन रीपोलाराइज्ड स्टेज। तो आम ये से कर्व करुचे आम ग्राफ देखौचे सो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कथा आम कहूचे सो जिते आम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखुचे ताको आम एक्शन पोटेंशियल बोली कहूचे। Which of the following best describes the feedback regulation mechanism of growth hormone and its direct targets? That is negative feedback by insulin-like growth factor IGF-1. This element that cannot be found in biochemicals that is mercury. Biomolecules that are mercury. Then which species can feed on a plain diet of inorganic nutrients, getting their carbon from carbon dioxide and relying on H2S to fuel their energy need, that is lithotrophic. Which genes or regulatory genes are related to pattern formation in the fly? तो ये टिके कन्फ्यूजिंग अच्छी मते लगुच कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हेमोटिक ऑल ऑफ द एबव भी हो पारे देखिबा आंसर आसले एटा चेक करबा। Which is essential for normal calcium deposition in bone and calcium reabsorption by the gastrointestinal tract? तो मो हिसाब रे एटा कैल्सी ट्रायल हबो। Then angiotensin 2 is the body's most powerful sodium retaining hormone. Following ETC complex does not directly contribute to the proton gradient across the mitochondrial membrane, that is complex 2. तो complex 2 ही जणे जे कि प्रोटॉन फॉर्म करे नाही बाकी समस्त प्रोटॉन फॉर्म करि थांती। So during translation the role of the ribosome A site तो इठी A site थाए P site थाए E site थाए तो A site रो काम रहला कोन ना हमर इनकमिंग अमाइनो एसिड tRNA रो बाइंडिंग। Then next that is left handed DNA कथा कह जाउची and found under high salt concentration, that is ZDNA. In the tryptophan operon जेहेतु tryptophan गोटे रहला हमर repressible operon so it repress the operon. Number B 28 which vertebrate is well known for the ability to regenerate entailus, that is salamander. Ability of a cell to de-differentiate and re-differentiate into various cell types during regeneration is known as totipotency. टोटिपोटेंसी भी है पारिबो प्लूरिपोटेंसी भी तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मते टोटिपोटेंसी लागला। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल IPSC are generated by reprogramming somatic cells to pluripotent state. In PCR, the step that involves heating the reaction to around 95 degrees Celsius, that is denaturation. Scintillation counting is used to measure that is radioactive in a sample. A common application of radioisotopic techniques in molecular biology is tracking the incorporation of radioactive isotopes into biomolecules. Which staining method is used to visualize nucleic acids in tissue section, that is fusion reaction? In the classical mode of steroid hormone action, receptors act as transcription factor. Vitamin D receptor ERP57 or mass membrane associated rapid response steroid binding, also known as and that mediates the intestinal absorption of phosphate and calcium. Renin is synthesized and stored in an inactive form called prorenin in the juxtamedullary cells of the kidney.
In the absence of aldosterone, as occurs with adrenal destruction or malfunction, addition disease, there is loss of sodium and accumulation of potassium from the body. In the regulation of glycolysis, which enzyme is considered the rate limiting step and what molecule is known as allosteric activator? So number 1 step, number 3 step and number 10 step रे देखा जिवो तो हमर ऑप्शन हिसाब रे ऑप्शन बी phosphofructokinase 1. Misfolded proteins in the endoplasmic reticulum are often targeted for degradation. This process is known as. एक्चुअली ये दुईटा ऑप्शन मत ठीक लगुच गोटे यूबिक्विटिन प्रोटीएज पाथवे गोटे ईआर एसोसिएटेड डिग्रेशन. एक्चुअली आग यूबिक्विटिन प्रोटीएजम पाथवे हुए देन ताको ओवरअली ईआर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कह जाए. तो दुईटा ऑप्शन भितर ऑप्शन सी टा तो ठीक लगुच. देखिए आंसर कौन आसो. 41. The enzyme responsible for the transamination of amino acid converting amino acids to keto acid. जेहेतु transamination अच्छी सो ट्रांसआमिनेज भी इनवॉल्व थाए अमाइनो ट्रांसफरेज भी इनवॉल्व थाए. तो ये दुईटा आंसर मत तो ठीक लगुच. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक दिस इज एस्पेक्टेड अमाइनो ट्रांसफरेज. द फर्स्ट स्टेप इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड बाय व्हिच मॉलिक्यूल दैट इज एटीपी. Northern blotting is used to detect RNA. Which of the following best describes the structure responsible for the high specificity of antigen-antibody interaction, that is the variable region of the antibody? Which type of hypersensitivity reaction is mediated by IgE and involves mast cell, that is type 1? Embryonic induction involves the action of one group of cells or another to direct its development. এটা भी हबनी. ऑटो इम्यूनिटी ऑब्वियसली सेल्फ एंटीजन को चिन्ही पारे नहीं, सो फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड बाय विच जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड, दैट इज डीएनए मिथिलेशन. Embryonic stem cells are characterized by their ability to differentiate into any cell type in the body. At tight junction, plasma membranes of neighboring cells tightly pressed ठीक अच्छी, bound together by specific protein मध्य ठीक अच्छी, establish a barrier that prevents leakage of extracellular fluid across epithelial layer मध्य ठीक अच्छी. So all of the above. Oxidative deamination. So oxidative deamination रे मन रखिबा एंजाइम यूज हुए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है. सो ए केस रे जतबळे लिवर रे कथा हमें कहूचे तो यूरिया एंड एनएडीएच फॉर्मेशन होता है. Then the process of adding 5' cap to mRNA involves the addition of which nucleotide? तो ये जो कैपिंग प्रोसेस होची आमर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट केस रे आम देखि थाउ गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सहित अटैच हुए. During the beta oxidation of fatty acid, each cycle shortens the fatty acid chain by 2 carbon atoms. During pregnancy, which hormone is primarily responsible for increasing the mother's insulin resistance, thereby ensuring a steady supply of glucose to fetus? एक्चुअली केस सिंगल हार्मोन इनवॉल्व न थाए, मोर देन वन हार्मोन इनवॉल्व थाए, जमतीक ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन रही पार, प्रोजेस्टेरोन रही पार, कॉर्टिसोल रही पार, एस्ट्राडियोल मध्य रही पार. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये देखा गले ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन. देन साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन कम्बैटिंग दैट इज इंट्रासेलुलर वायरसेस. आक्रोजोमल रिएक्शन इन स्पर्म जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करे, सो बाय पेनिट्रेटिंग द एग्स आउटर लेयर. The Fc region of an antibody is critical for mediating interaction with cell surface receptor and complement proteins. Microtomy technique for microscopic examination. So microtomy technique रे आमे thin slice बनाई था, so sectioning tissue into thin slice. Interference primarily function to inhibit viral replication. Strength of the binding interaction between antigen and antibody that depends on the closeness of the stereochemical fit between antibody sites and antigen determinants, that is affinity. The first antibodies to be produced in a humoral immune response are always IgM. Agarose gel electrophoresis is commonly used to separate DNA fragments based on their size. In nucleus, DNA coils around histone proteins to form which structural unit, that is nucleosome. In the Michaelis-Menten equation, the Michaelis constant represents the substrate concentration at half the maximum velocity. The removal of introns from pre-mRNA from mature mRNA is carried out by spliceosome. In Western blotting, the primary antibody is used to specifically bind to the target protein, option C. In prokaryotes, the initiation of translation begins with the recognition of which sequence of the mRNA.
So जेहेतु प्रोकैरियोट पचारिछि साइंडलगार्नो सीक्वेंस. The lack occurrence of E. coli is the hypothesis for gene regulation. The redundancy of the genetic code refers to the fact that each amino acid is specified by multiple codons. Graft versus host disease is a complication primarily associated with bone marrow transplantation. In vitro fertilization, the process of injecting a single sperm directly into an egg is called intracytoplasmic sperm injection. Which type of microscopy is most suitable for observing the detailed internal structure of cells at high resolution? That is transmission electron microscope. Anchoring junction called desmosomes connect the epithelial cell of adjacent cell, while hemidesmosomes anchor cytoskeleton to basement membrane. Renin is a protein enzyme released by the kidney when arterial pressure falls too low. So pacharicheti dog chromosome number, that to diploid chromosome number, that is 78. Prophase 1 रे homologous pair has one or more except region. तो जो एक्सेप्ट रीजन रही कनेक्शन होता कि कौन रोचे काइस्मा. In degenerative disease of the nervous system called Huntington disease is caused by lethal dominant allele, no obvious phenotypic effect until the individual is about 35 to 45 years. Down syndrome is often called trisomy 21 because of extra chromosome. Which component of biological membranes contributes most significantly to their fluidity, that is membrane lipids? Eukaryotic chromosomal DNA molecules have special nucleotide sequence called telomere. So telomere जदि shortening हबो ताले कौन disease हबो जोटा कि आमे कहूचे cellular aging. So proteins called histones are responsible for the level of DNA packing in nucleosome during. तो during पचारिछि so सेटा हमरो मेटाफेज टाइम रे हेई थाए. तो ये मत तो नन ऑफ द एबोव आंसर ठीक लगुच. देखा ये क्वेश्चन आमर ऑफिशियल आंसर कि कौन आसो. देन जदि कौ मैंने जानी यार आंसर किसी कमेंट बॉक्स में जन. A change in a nucleotide may transform one codon into another, that is translated into the same amino acid. Such a change is example of silent mutation. Which process contributes to genetic diversity among offspring? Meiosis. कहीं recombination होची सेथिपाई. Which of the following statements about apoptosis is correct? जोटा कि apoptosis रे हमें caspase pathway देखिया को पाइता. So caspases play a key role in apoptosis. Which of the following is a second messenger commonly involved in signal transduction pathway? So that is CMP, cyclic adenosine monophosphate. A trihybrid S cross potentially gives 8 classes of offspring. Which hormone from the anterior pituitary has a direct effect on growth plates of long bones during development? Growth hormone. Which hypothalamic hormone inhibits the release of prolactin from the anterior pituitary? That is dopamine. During embryo transfer in IVF, embryos are typically transferred. So जेहेतु embryo कथा पचारिछि so uterus रे transfer करा जिवो. In a spectrophotometric assay, the purpose of a blank sample is to correct for any observance due to solvent in the solution. The primary enzyme used in PCR to synthesize new DNA strand, that is DNA polymerase. Which transport mechanism requires energy input from ATP, that is active transport? During which phase of the cell cycle does DNA replication start, that is S phase, synthetic phase? Which cytoskeletal component is involved in cell movement and cytokinesis, that is actin filament number A? Which type of gene interaction occur when the phenotypic effect of one gene masks the effect of another gene? Epistasis. Many of the kinases that drive the cell cycle are actually present at a constant concentration in the growing cell, but much of the time they are in an inactive form. To be active, such a kinase must be attached to cyclin. During anaphase, MPF helps switch itself off by initiating a process that leads to the destruction of its own cycle. Images of the chromosomes are arranged in pairs, starting with longest chromosomes. The resulting order display is called a karyotype. So to बड़ बड़ थाए तापर आमर XY क्रोमोसोम छोट छोट आसता. तो ये karyotype रे आमर ए साइज को देखिक ही अरेंजमेंट करा जाए. A point mutation can also change a codon for an amino acid into a stop codon. This is called as nonsense mutation. Cas9 is a bacterial protein that helps defend bacteria against the viruses that infect them. In bacterial cell, Cas9 acts together with guide RNA made from CRISPR region of the bacterial genome. So option B.
थैंक यू। जहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कले चेक करदेव आंसर कि आम अनअफिशियल आंसर कि जहाँ रहा चेक करदेव जार केते कौन मार्क रहा कमेंट बॉक्स रे जनइब एंड किसी जदि आंसर ये भूल थाई पारे जदि आउ किसी क्या ठीक लगुच ताले कमेंट बॉक्स रे जनइदेव। ठीक अच्छे आम एनालिसिस कर। थैंक यू।